Welcome back, ladies and gentlemen, and Pakistan have managed to win the first test versus Bangladesh at Chattogram. It wasn't that straightforward or phas gayi thi beech mein Pakistan, and since I've already covered days 1 and 2, you can go check the analysis out for those in my previous videos. I'll be covering days 3, 4 and 5 on this volume of CRIQAZI Diaries. Have a look at that, smiles up, oh, it's nearly taken someone out the stands. That was a flat six right under the stand there, the George Giffen stand, happy for the members, and it went like a rocket. Well, Wicket 24. Achha, once again, before I even talk about the match, I just want to talk about the level of umpiring on this Bangladesh tour. It's been pathetic for the lack of a better word. Reviews ना होते तो पता नहीं कितनी विकेटें गिरती हैं इस टेस्ट मैच के अंदर, और I hope कि ढाका में इससे बेहतर अंपायरिंग का लेवल हो. उम्मीद ही आप कर सकते हो, और न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया वाले टेस्ट में भी अच्छी अंपायरिंग नहीं थी. So I hope the umpires turn it around in both of those test series और हमें बेहतर डिसीजंस देखने को मिले. स्टार्ट करते हैं डे 3 से. पाकिस्तान actually found themselves in a great position. 146 for the loss of no विकेट्स थी पाकिस्तान, और एकदम अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशंस 140 रन्स के अंदर अंदर सारी की सारी 10 विकेटें गिर गई. इधर मैं पिछली वीडियो में बात कर रहा था कि पाकिस्तान शुड लुक टू बैट आउट डे 3 एंड बैट ओनली वंस, बट दैट डिडंट हैपन एट ऑल. ताइजुल इस्लाम को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है इसके लिए. ही टुक 7 for 116 which were the best figures by a Bangladeshi bowler against Pakistan in test cricket. He ended up with 8 wickets in the game in total, और विकेट टू विकेट बॉलिंग कराई. उन्होंने रूम नहीं दिया ज्यादा बैट्समैन को, क्रैम्प करके रखा, और इसके लिए उनको रिवॉर्ड भी काफी मिला. एंड ऑन ओकेजन ही वाज एबल टू गेट सम विशियस टर्न. सो क्रेडिट टू ताइजुल, इट वाज अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि बांग्लादेश के वो बेस्ट प्लेयर थे इस टेस्ट मैच में, अलोंगसाइड लिटन दास, एंड बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स आर अनलकी टू हैव एंडेड ऑन द लूजिंग साइड. तो डे 3 की शुरुआत में अब्दुल्ला शफीक आते सार आउट हो गए 52 पे, एंड देन अजहर अली फेल फॉर अ गोल्डन डक. उनकी बात करूंगा मैं वीडियो के एंड में भी. एंड देन योर मिडिल ऑर्डर ओनली कंट्रीब्यूटेड विद 23. बाबर आजम 10 पे आउट हो गए. ही गॉट अ रियली गुड वन फ्रॉम मेहदी हसन मिराज, और फिर फवाद आलम भी 8 पे आउट हो गए. जनरली वो काफी रिलायबल साबित हुए हैं पाकिस्तान के लिए जब से वो टीम में वापस आए हैं, बट ही गॉट अ डिलीवरी फ्रॉम ताइजुल इस्लाम दैट टर्न्ड वेरी वेरी शार्पली. तो मैं उनको इतना फॉल्ट नहीं करूंगा. बांग्लादेश को भी क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग्स में. रिजवान भी 5 पे आउट हो गए, एंड ऑल ऑफ अ सडन लग रहा था कि पाकिस्तान को इधर कोई 70-80 की लीड पड़ जानी. आबिद अली डिड एड 40 रन्स ऑन द डे. वो 133 पे जाकर आउट हुए. ही रिकॉर्डेड हिज 4th टेस्ट मैच सेंचुरी, एंड व्हाट अ टेस्ट मैच he's had. उनकी भी मैं आगे जाकर थोड़ी ज्यादा तफसील में बात करूंगा, और अभी मैं फोकस करना चाहता हूं फहीम अशरफ के ऊपर. हाउ कंसिस्टेंटली हैज दिस गाय परफॉर्म्ड इन टेस्ट क्रिकेट जब से ये टीम के अंदर आए हैं. Again, his 38 was almost invaluable. पाकिस्तान को ultimately 44 की लीड कंसीड करनी पड़ी, और अगर फहीम 38 ना करता तो डेफिनेटली 75 to 80 at the very least आपको लीड पड़ जानी थी. I'm actually happy कि फहीम अशरफ जो हैं अब सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे, so he can solely focus on that, and I think he's done marvelously well. और साथ शाहीन शाह अफरीदी ने क्या जबरदस्त बैटिंग की. Not out for 13 at the end of the first innings. उनका भी बहुत बड़ा रोल था. लास्ट विकेट पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को बहुत बचाया इस मैच में. मेरे ख्याल से जो हेडन के साथ प्रैक्टिस करते रहे ना शाहीन, उनका उनको अब जाकर फायदा हो रहा है, because he looked really good. By no means did he look like a tail ender. खैर, फहीम और शाहीन की पार्टनरशिप के बावजूद पाकिस्तान ऑल आउट हो गया 286 पे. 44 की लीड कंसीड हो गई, और उस वक्त काफी डर लग रहा था, क्योंकि जब आप एशिया में टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स के बाद लीड कंसीड कर लेते हो, आपका गेम में वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है. और उस पॉइंट पे ये भी लग रहा था कि पाकिस्तान ने स्ट्राइक रेट में थोड़ी कोताही की है, क्योंकि आपकी फर्स्ट इनिंग्स का स्ट्राइक रेट बहुत पुअर था, और आपने 115 ओवर्स खेले. 3 की रन रेट पे खेल लेते तो लीड तो कम से कम खत्म हो जाती. तो उस वक्त ये डेफिनेटली लग रहा था कि स्ट्राइक रेट जो है शायद लेटर ऑन इन द गेम पाकिस्तान को आकर हॉन्ट करे. बट इट डिडंट मैटर टू मच इवेंचुअली, बिकॉज़ पाकिस्तान's bowlers were up to the task when they came out to bowl again in the second innings. Shaheen Shah Afridi was on absolute fire. 5 for 32 के figures इन्हें रिकॉर्ड किए. His third 5-wicket haul of the year, 4th in total, and now he is joint leading wicket taker in Test cricket in 2021, an honor he shares with Ravichandran Ashwin. और शाहीन का जो ग्राफ है वो तो बस बढ़ता ही जा रहा है. He's definitely right up there with the best in world cricket right now across formats, and he put a lot of effort on this pitch. देखें, इतनी भी पेस बॉलिंग के लिए कंड्यूसिव नहीं थी ये पिच, और उनको काफी बैक का इस्तेमाल करना पड़ा, काफी एफर्ट डालनी पड़ी. एंड आई होप कि शाहीन कहीं गलत टाइम पे इंजर ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं वो, एंड ही डज पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट. हमेशा ही 110% वो देते हैं फील्ड पे, एंड या आई एम जस्ट रियली अफ्रेड फॉर हिम, एंड आई होप ही कैन बी मैनेज्ड अ बिट बेटर. हसन अली जिन्होंने 5 विकेट हॉल लिया था पिछली इनिंग्स में, इसमें थोड़े एक्सपेंसिव थे. 52 रन के लिए चले गए इन लाइक 11 ओवर्स, बट ही डिड टेक 2 विकेट्स, तो उनका भी डेफिनेटली रोल था. नुमान अली
went wicketless in this test match and I don't think that's happened yet. जब भी नोमान अली टेस्ट मैच खेले उनकी कोई ना कोई contribution जरूर होती है. I was a bit surprised. I expected more from him and maybe it was just an off game. रिजवान ने उनकी बॉल पे स्टंपिंग भी मिस कर दी, so he was a bit unlucky. आउट भी वो जरा अनलकी तरीके से हो गए. उनके डिसमिसल पे क्लियर इनसाइड एज थी, yet the third umpire gave it out. And Sajid Khan finally got some reward in the second innings. उनने भी 3 for 33 लिए. काफी सवालात भी उठ रहे थे साजिद खान पे. And I will say कि पाकिस्तान के स्पिन अटैक में एक कमी जरूर है, is the fact that they don't have a wrong un और a दूसरा. तो उनके पास उस तरह की वैरायटी नहीं है इस वक्त, and Pakistan could definitely do with that. Liton Das once again start for the bat for Bangladesh in the second innings as well. 59 किए उनने, which took his tally to 173 for this test match. Of course, he did score 114 in the first innings. And Azhar Ali was actually looking really good on debut. वो उस तरह खेल रहे थे कि लग रहा था ये पाकिस्तान से मैच ले जाएंगे. He was well set on 36, but then he got hit on the helmet by Shaheen Shah Afridi delivery और उनको फिर concussion हो गई and unfortunately he had to be substituted. उनकी जगह नूरुल हसन आए as a concussion substitute and he did not have that same kind of impact. वैसे शाहीन शाह अफरीदी की शॉर्ट डिलीवरीज के साथ कुछ खास स्कोप नहीं कर पाई बांग्लादेश. वो तो मुझे लग रहा था डरे हुए हैं, इतनी ज्यादा विकेट्स लिए शाहीन शाह अफरीदी ने शॉर्ट बॉल पे अपनी, और सैफ हसन तो खास तौर पे बिल्कुल ही कोप नहीं कर पाए. वो तो बच रहे होते थे शाहीन की शॉर्ट डिलीवरी से. शायद इन पिचेस पे ज्यादा आदत नहीं है इनको शॉर्ट बॉल्स खेलने की, बट अगेन इसमें शाहीन को भी बहुत ज्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा कि अगर वो इस तरह की विकेट पे इस तरह की परफॉर्मेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं. जस्ट इमेजिन कि जब फास्ट बॉलिंग के लिए विकेट अच्छी होगी वो क्या हाल करेंगे दुनिया का. सो अपार्ट फ्रॉम लिटन दास एंड यासिर अली, नो अदर बांग्लादेश बैट्समैन वाज इवन एबल टू रिकॉर्ड अ स्कोर ऑफ 20 और 157 पे ऑल आउट हो गई बांग्लादेश. दे सेट पाकिस्तान अ टारगेट ऑफ 202 टू चेस और उस वक्त ये काफी स्टीप लग रहा था. आई पर्सनली थॉट कि पाकिस्तान को काफी मुश्किल होगी इस स्कोर को चेस करने में. आई वांटेड देम टू रिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश टू अराउंड 150 क्योंकि एशियन कंडीशंस में चौथी बैटिंग करते हुए 200 का जो स्कोर है वो खासा मुश्किल हो सकता है और पाकिस्तान की तो वैसी चेसिंग की इतनी अच्छी हिस्ट्री नहीं थी. सो आई वाज एक्चुअली क्वाइट फेयरफुल एट दैट पॉइंट और मुझे लग रहा था दैट मे बी, जस्ट मे बी, Bangladesh managed to win their first ever test match versus Pakistan in the history of test cricket. खैर जिस तरह पाकिस्तान ने फिर बैटिंग की when they came out to bat in the fourth innings, एक वक्त पे भी नहीं लगा कि पाकिस्तान से स्कोर चेस नहीं होगा. They were just that good और बहुत ही comfortably आराम से मैच जीत गए ultimately, which I think is a massive victory. Pakistan aren't known to be good chasers in cricket and I think they're turning that page now. आपको T20 World Cup में भी नजर आया होगा चेस करते हुए पाकिस्तान कितना अच्छा खेल रहा था, and now we've seen that in test cricket as well. So kudos to Babar Azam, जो भी वो टीम के साथ करना चाह रहे हैं, that's definitely coming towards fruition and I think अभी तो और भी बहुत ज्यादा contribute करना है बाबर आजम ने as captain to this team and of course as a batsman as well. तो अब्दुल्ला शफीक और आबिद अली ने लगा दी 151 runs की partnership in the second innings. That pretty much killed the game. आबिद अली got a bit unlucky, 91 पे पहुंच गए थे वो. He would have become the 10th Pakistani batsman in the history of test cricket to record twin hundreds in a test match, but he fell short by 9 runs. However, he did deservedly win the man of the match award और इस मैच के अंदर 224 रन की आबिद अली ने. अगर उन्हें ना की होते तो पाकिस्तान डेफिनेटली ये मैच हार जाता. सो आई थिंक दैट्स वेरी वेल डिजर्व्ड एंड आबिद अली इज फाइनली लुकिंग टू कम ऑफ एज. 126 फर्स्ट क्लास मैच खेले में तो एक्सपीरियंस की तो डेफिनेटली कोई कमी नहीं है और उन्होंने अपनी गेम को बैक किया. ही हैड अ स्टेलर सीजन इन द कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी एंड ही हैज क्रेडिटेड दैट टुवर्ड्स दिस परफॉर्मेंस. मगर एक चीज मैं आबिद अली पे फिर से जरूर ये बोलूंगा कि इफ द टीम इज नॉट बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और श्रीलंका, ही ओनली एवरेजेस 18.88 विद द बैट. तो हायर क्वालिटी ऑपोजिशन के खिलाफ इनको अपने आप को अभी भी प्रूव करना है. ऑफ कोर्स जो वीकर ऑपोजिशन है टेस्ट क्रिकेट में, टॉप 10 रैंकिंग्स में जो बॉटम 3 टीम्स हैं, उनके खिलाफ तो ये गारंटीड स्कोर करते हैं हमेशा और हेविली भी करते हैं. मगर अभी पाकिस्तान का बम्पर होम समर आ रहा है टेस्ट क्रिकेट में. पाकिस्तान will be hosting New Zealand, Australia and England and I think all eyes will be on Abid Ali whether or not he can perform versus those teams. अब बात कर लेते हैं अब्दुल्ला शफीक की. 52 in the first innings and 73 in the second. He was rock solid on debut and even though he's only played 3 first class matches prior to his test debut, आपको नजर आ रहा था कि ये एक बहुत पाए के बैट्समैन है. मिसबाह उल हक of course has said that he's learned his trade at club cricket, तो वो compensate कर लेंगे lack of first class experience को. He played very compactly, he backed himself versus loose deliveries. टेक्निकली वो बिल्कुल ठीक लगे और टेम्परामेंट उन्हें बहुत अच्छा दिखाया. सो दीज आर वेरी वेरी प्रॉमिसिंग साइंस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड अब्दुल्ला शफीक गोइंग इनटू द फ्यूचर. अजहर अली एंड बाबर आजम फिनिश्ड ऑफ द गेम. पाकिस्तान 8 विकेटों से जीत गया. अजहर एंडेड ऑन 24 नॉट आउट बट ही वाज डिसमिस्ड फॉर अ गोल्डन डक इन द फर्स्ट इनिंग्स और अजहर की फॉर्म से मैं काफी कंसर्न्ड हूं. ही हैजंट रियली परफॉर्म्ड दैट वेल एवर सिंस मिसबाह एंड यूनुस रिटायर्ड. एक आधा स्कोर है बीच में जो उनको बचा जाता है बट फॉर द मोस्ट पार्ट ही हैज बीन लार्जली डिसअपॉइंटिंग एंड आई फील लाइक दिस माइट बी अ golden opportunity to rest Azhar Ali for the second test and you can play one of Kamran Ghulam or Saud Shakil who have scored runs heavily in first class cricket. इनके बहुत ज्यादा runs हैं. Kamran Ghulam जो थे
वो पिछली कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लीडिंग रन स्कोरर थे. इनफैक्ट नो वन हैज एवर स्कोर्ड मोर रन्स इन द कायद-ए-आज़म ट्रॉफी इन अ सिंगल सीजन दैन कामरान गुलाम. और साउथ शकील की तो मैं इतनी ज्यादा दफा बात कर चुका हूं. He can bring so much value into this team. Not only does he average 49.95 with the bat in 48 first class games, but he also bowls left arm off spin, which could really prove to be useful in these conditions. I doubt though Pakistan ye changes karegi, they will back Azhar Ali, and I do respect Azhar Ali a lot. Look, he's been a fantastic servant for Pakistan cricket, but ultimately आपको मेरिट को भी देखना पड़ता है. और इन लड़कों को फिर आपने कब अपॉर्चुनिटी देनी है? 8 मर के टेस्ट तो पाकिस्तान साल के खेल लेते हैं at best. So I hope Babar Azam is a bit brave और दे इनको मौका. I would prefer Saud Shakil, मगर चलो कामरान गुलाम को ही दे दे. Anyway, Babar Azam himself ended on 13 not out. He did play some scintillating strokes in that knock of 13 not out, and he definitely looked better than he has looked all tour, because Babar Azam has now failed in 4 consecutive innings prior to this one. T20s में भी नहीं चले, फर्स्ट इनिंग्स में नहीं चले, और उनका मेरे ख्याल से पहला ही स्लम्प आया कोई 2-2.5 सालों में. I'm not too worried. I really hope that he can score heavy runs in Dhaka, and what Babar Azam in his test career is lacking right now is a daddy 100. Hundreds उन्होंने किए हैं, बड़े 100 नहीं लगाए, so I hope he can change that at Dhaka. Of course, things will get harder for Pakistan. Bangladesh की अभी थोड़ी सी depleted team थी, मगर Shakib Al Hasan is coming back from injury, and given how much trouble Pakistan has had versus left arm off spin in this game, Shakib will only cause them more problems. And also Bangladeshi speedster Taskeen Ahmed is also returning to the squad, तो strengthen हो जाएंगे ये ढाका के लिए, and I definitely think that they will pose a greater threat to Pakistan in the second test as compared to the first test. One final thought with respect to Pakistan before I end this video is the fact that Shaheen Shah Afridi and Hassan Ali took 14 wickets in this game. और pace bowlers को तो वैसे भी बांग्लादेश में उस तरह की help नहीं मिलती, and they definitely need some support. अब आपका spin attack उस तरह successful नहीं हो सका, so maybe you need to make some changes over there. You could rest one of the spinners for a fast bowler. Of course, आपके पास मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह bench पे हैं, so you could give one of those guys a game. Or you could continue with a two-pronged spin attack, और आप एक spinner की जगह जाहिद महमूद तो खिला दें, जो leg spinner भी हैं और उनके पास गूगली भी है. क्योंकि अगर शाहीन और हसन को और support ना मिला तो ये तो टूट जाएंगे इस तरह. They're putting in too much effort in each test match, and they definitely require some help, जो पाकिस्तान इस वक्त उनको दे नहीं पा रहा. So do let me know who you think will win the second test match at Dhaka in the comment section below. That's a wrap for volume 91, folks. As always, if you enjoyed this video, like it, share it, subscribe to the channel, and don't forget to hit that bell icon in order to be notified about all of my latest videos. I'll catch you soon enough. Till next time, Qazi off the mic. Have a look at that, smiles up, oh, it's nearly taken someone out the stands. That was a flat 6 right under the stand there, the George Giffen stand, happy for the members, and it went like